Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully all the students will be fine. Today we are going to have the lecture number 4, chapter number 10, Optical Instruments, um, in which we are going to discuss the optical fiber. In previous lectures we have done with the three optical instrument. The first one was simple microscope, compound microscope, and the astronomical telescope, and today we are going to discuss about the optical fiber. This is basically telecommunication डिवाइस, यू कैन से एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और विद हाई स्पीड एंड विद एनी लॉस ऑफ पावर, एनी लॉस ऑफ एनर्जी. जो आप डाटा सेंड करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं, विदाउट डिस्टॉर्शन, विद इन नो टाइम यू कैन सेंड दैट डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. So first of all, come to the definition. A fiber through which thousands of the signals, signal ये electrical signals या कोई भी information in the form of light, या आप information को coding करते हैं using different modulators, और वो information store करवाते हैं और एक point से दूसरे point तक transfer करते हैं. So signals are basically the information were transmitted simultaneously with an extremely high speed from one part of the world to the other. Such glass fiber is known as optical fiber. कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो फाइबर, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर. इसमें बेसिकली होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के दो प्रिंसिपल्स हैं. I mean to say, you have to follow these principles to send the information. The first of all, for propagation of the light, for the propagation of the signals or the information, the light must confined within the fiber. कि वो light या information fiber से बाहर नहीं जानी चाहिए. It should confined in the fiber. जो भी information है, जो भी signal है, that should remain confined in the optical fiber. For that we can use two ways. The first one is total internal reflection and continuous refraction. These two are different phenomena. Reflection is basically when the light is traveling from one medium to another medium and strike the boundary of the second medium, it reflects, it bounces back into the same medium. वो उसी medium में bounce back होके वापस आ जाती है. That is reflection. And refraction is जब एक light एक medium से दूसरे medium में travel करती है, it will change path. और हम continuous reflection और total internal reflection को use करते हुए हम सिग्नल को कन्फाइंड रख सकते हैं इनसाइड द फाइबर, इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है. द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होती है. लाइक एयर इज़ द रेयर मीडियम यूजुअली वी कंसीडर, ग्लास, प्लास्टिक और वाटर इज़ यूजुअली कंसीडर एज द डेंसर मीडियम. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर मीडियम है, जिसकी डेंसिटी कम है दैट इज़ रेयर मीडियम. So when light enters from denser medium to rare medium, it bends away the normal. Like in this case you can see in the picture, this one is the ray, the first ray, this is the incident angle, this one blue color के साथ जो line dotted line लगी हुई है, that is normal, and this is the angle of refraction. This is the ray 1. We have considered 4 ray, 1, 2, 3, and this one is the 4th. So first of all, come to the first ray. Angle of incidence, this is from going from water, or you can say the denser medium, and this one is the rare medium, that is air. When the light is entering from denser to rare medium, it bends away from the normal, making an angle of refraction. So as much as you are increasing the angle of incidence, angle of refraction is increasing. Like you can see in the ray 2, the angle of refraction is increasing. Normal से जो angle बन रहा है, that is greater than the previous one. A point will come when you can see in the ray 3, when the angle of incidence for which the angle of refraction is making an angle of 90 degree,
इसमें देखें थर्ड रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो 90 डिग्री हो, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. सो दिस इंसिडेंट एंगल विल बी द critical angle, and this critical angle you can write, this one is the critical angle represented as theta c. In definition you can also see, if the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called the critical angle, represented or denoted by theta c. So basically this is the total internal reflection. अब इस केस में come to the ray 4. In ray 4 when the incident angle, ray 4 में देखें, when the incident angle become greater than the critical angle, for example theta c is 40 degree, in this case this angle in ray 3 the incident angle was 43 degree. When you are going to increase the incident angle by 43 degree, you can have 44 degree. जब इस ray 4 को 44 degree पे incident करेंगे, then the light will not travel into the other medium, rather than it will reflect back into the same medium. You can see ray 4 is not going to the air or the rare medium, it is bounces back into the same medium. For the incident angle for which the angle refracted is 90 degree, that is called critical angle. और जब आप इस critical angle से angle बढ़ाते हैं तो light उसी medium में bounce back होके वापस आ जाती है, that is called total internal reflection. This is the phenomena we used in the optical fibers. Here is the definition I am going to read for you. When the incident angle becomes greater than the critical angle, so here is the definition of that total internal reflection. When the incident angles become greater than the critical angle, the light reflect back into the same medium. This is called total internal reflection. Now there is another point we must have to consider, that the speed of light depends upon the refractive index n of material. Refractive index क्या होता है? The index of refraction is the ratio of the speed of light c in vacuum. आप रेशियो लेने जा रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की जब वो वैक्यूम में से पास हो रही है टू द स्पीड ऑफ लाइट वी इन द मटेरियल के, वो जिस मटेरियल में से गुजर रही है. सो you can write mathematically that n is equal to c divided by v. This is equation number 1. There is another term, that is Snell's law. We are going to use Snell's law. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. n1 is the refractive index of the incident medium, यानी रे जहाँ से गुजर रही है, जहाँ से इजेक्ट हो रही है. theta 1 is the incident angle, n2 is the refractive index of the second medium, theta 2 is the refracted angle, कि जो refraction का angle है. So this one is the equation number 2. Now if the theta 1 mean to say incident angle is theta c, remember that critical angle, this is critical angle. तो critical angle के लिए जो refracted angle होता है वो कितना होता है 90 degree. You can see in the diagram कि this is the refracted ray and we are making an angle 90 degree, and for that refracted angle we have given the name to the incident angle, that is critical angle. So if the angle theta 1 incident angle is theta c, the refracted angle will be the 90 degree. Then put these values in equation number 1. N1 sin theta c is equal to sin 90 degree. Sin 90 degree again give you the value of 1, and N1 sin theta c is equal to N2. Here you can get the ratio sin theta c is equal to N2 divided by N1. Next we are going to assume that for glass air boundary, it means the light is entering from glass to entering into the air from glass. Glass से air में जा रही है, and for that value of N2 is 1.0 and the value of N1 is 1.5.
इट्स मीन कि जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.5 और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.0. when the light is traveling through different mediums, यानी यहाँ पे प्लास्टिक है या वाटर है या वॉट एवर दैट इज़, यू विल यूज़ दैट वैल्यू ऑफ एन. हर मटेरियल की, हर मीडियम की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है. इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज़ दैट when light is traveling from glass to air, the glass की 1.5 and air की 1.0. For that critical angle is 41.8 degree. So total internal reflection कब होगा? जब critical angle से ज़्यादा incident angle होगा, because this is critical angle. For that critical angle the angle of reflection will be 90 degree. लेकिन हमें तो total internal reflection चाहिए, and for the total internal reflection the incident angle must be greater than this angle. और वो जब भी आप 42 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट करेंगे ग्लास से एयर में, दैट विल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब इसी को पिक्टोरिकली दिखाया गया, डायग्राम से दिखाया गया. हियर वी कैन यूज दिस वन इज रे 1, this one is ray 2, and this is the axial ray जो सेंटर में से गुजरी है. the central ray is axial ray and this one is the ray 1. ray 1 क्योंकि critical angle से कम incident angle है, so it will refract. But ray 2, the incident angle is greater than the critical angle, so it will totally internally reflection. जो total internal reflection होगी वो phenomena show करेगी. This is just the pictorial explanation. Then कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन में बेसिकली हम मटेरियल दो यूज़ करते हैं. द इनर वन इज़ कॉल्ड कोर एंड दिस वन, एंड द आउटर वन इज़ कॉल्ड क्लैडिंग. कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट शुड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई डेंसिटी, और जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो होना चाहिए लोअर होना चाहिए. So this was regarding optical fiber. If you got any question, then you can ask in the WhatsApp group. I'm going to answer that question first, then we will move towards the next lecture. Stay warm, stay alive, and thank you very much.